in Sanskrit translates, "The lamp is luminous, its radiance grants victory, its light imparts dharma, artha, kama, and moksha, that is, righteousness, prosperity, pleasure, and finally, emancipation." Lamp is a symbol of knowledge, learning, and सब में ये जो वाले बैग ना छः ये छः में एक एक डालना है मैं लेके आ रहा हूँ ठीक है Done. Very nice. 3, 2, 1. Bell of NSC that is placed on the stage, which will be rung in a few moments from now. And this is the frame. The iconic bull of NSC is placed at the entrance in the porch. And the symbiotic relationship of NSC with the people of India, along with a coffee table empowering 1.4 billion dreams, a captivating narrative of the exchange's strong foundation and rapid progress in the last 30 years. It is a visual treat filled with stock market history. Thank you. I will request Ashish sir to please welcome Shri Rajkumar Gupta, Director of RAID 2. We all are excited, but your excitement must be definitely special. So please tell us something about that. More than excitement, it's a combination of excitement and I would say a little bit of anxiety. When the film releases, you want to know how the audience is reacting to it or कैसे उनको film लग रही है क्योंकि जब आप एक साल डेढ़ साल एक film के साथ गुजारते हैं और जब it's like going for an exam, you know, जब result आता है तो जैसे बच्चे curious होते हैं कि you know शायद हमने अच्छा किया अब result क्या है. So it's the same situation with us. So some kind of a nervous energy is always good, 100 as they say. 100%. So sir agrees with me. Let me come to the director. So how different was the process of both the films? In the sense that you were the director of RAID, which was released in 2018, and now this is the sequel of the same thing. So what new should we expect? I think दोनों अलग फिल्म थी, ये अलग फिल्म है एंड अलग एक्सपीरियंसेस हैं एंड ऑफ कोर्स अजय सर के अमय पटनायक सेम है पर एक नई कहानी है. वो रेड इनवर्ड थी, एक घर के अंदर थी, ये रेड आउटवर्ड है, घर के बाहर है. तो कहानी में डिफरेंस है दोनों फिल्मों की. Definitely, because what I have gathered is you have shot outdoor. Apart from Mumbai, you have traveled to Rajasthan and a few other states as well. I think I should ask the producers about it. How was the journey? जैसे कि आपने रेड पहले 2018 में रिलीज हुई और फिर उसके बाद में क्या सोच थी सीक्वल बनाने के पीछे? पिक्चर अब रिलीज होने के बाद हम लोगों को इतना अप्रिसिएशन मिला तो भूषण जी, मैं, अजय सर, हमने सब ने राज जी मिल के डिसाइड किया कि रेड 2 बनाते हैं और हमने इसमें कहानियाँ ढूंढनी शुरू की. इनकम टैक्स के ऑफिसरों से मिले, रेड डिपार्टमेंट के लोगों से जाके उनसे बात की तो जो एक्सपीरियंस सामने आए उन चीज़ों को जोड़ के हमने ये फिल्म बनाई है और बहुत अच्छी बनी है. Absolutely, I'm sure a lot of research in all the departments must have gone through in making of this film. And the way 2018 RAID was a roaring success, हम आज के अक्षय तृतीया के दिन पर और आज के शुभ मुहूर्त पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं RAID 2 के लिए देते हैं. Sir, would you like to add something to this? No, Your experiences in behind. My experience is very good with Ajay sir always, and Kumar ji was very confident about making RAID 2. जब RAID 1 बन रही थी उसी टाइम इन्होंने हमें बोला था कि RAID 2 की कहानी इन्होंने उसी टाइम डेवलप कर ली थी और इतने कॉन्फिडेंस थे कि अभी भी मुझे यही बोल रहे हैं कि अब RAID 3 अनाउंस करेंगे जल्द. तो आई होप ये पिक्चर सबको पसंद आए और सब इसको अपना प्यार दें.
We all hope the same. And coming to you, sir, you must be coming to NSC for the first time. So can I ask you, how was the experience here? It is fantastic experience, and I'm very proud that we are here for our film Raid 2, and I hope audience would love the film as they love NSC. Great. So it was nice having a chit chat with all of you. So with your permission, should we, any closing remarks from anyone? I just want to thank John G and everybody here for inviting us on this auspicious day. It's an honor. Thank you so much. So our best wishes to the movie और आप सब सपरिवार थिएटर में जाना आज ही और मूवी देखना. बिल्कुल. Can we raise our hands up for that, all of us? कल रिलीज हो रही है फिल्म 1 मई को, तो we promise that we all will go and try to watch it at the earliest. Thank you so very much. Thank you And with very that, much. we conclude. Kindly remain seated for a few moments. Just a minute, I will bother you for one picture. आता इकडेच ये, इकडेच आहे. नहीं, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी. वो छोड़ो, तुम मुझे ये बता, तुम मुझे फर्स्ट कर दो. मुझे घर से स्कॉट मंगाना है, मैं स्कॉटलैंड नहीं भूल रही हूँ. Just remain in the atrium for a few more moments, everybody. You are irritating me. MD sir, Or else don't call me. I will requesting all of you to please come back one more time, yeah? For a picture, one more picture, please. Ajay sir, MD sir. मैं जानबूझ के बैठी हूँ. तुम मुझे परेशान कर रहे हो. Okay, what a wonderful moment. तो हमने जो bell ringing किया था थोड़े time पहले, that exact moment has been captured and framed to cherish for times to come. So this is such a beautiful memory which will stay with us forever and ever. सब में ये जो वाले बैग ना 6, ये 6 में एक डालना है, मैं लेके आ रहा हूँ. ठीक है, डन. वेरी नाइस.